Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BTech PCM Wala. Today's lecture is going to be start class 10 mathematics second chapter polynomial. So my dear student, I am going to write the standard form of a polynomial ax square plus bx plus c, right? This is the standard form of polynomial, right? Where a, b, c belongs to R. R means what? Real number. What? Real number. Real number, basically it's made up of rational number and irrational number. Yes or no? Rational number, it can be expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0. And irrational number, we cannot express in the form of p by q. We cannot express. It's called irrational number, like root 2, root 3, pi. And rational number, all the integers, right? And plus minus 1, plus minus 2, minus 7, 9, all the natural number and all the whole numbers are belongs to rational number. And rational and irrational together is called real number. Yes or no? And come back to the standard form. Here ax square, bx and c are the terms where ax square, bx, c are the terms. What? Terms. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. Wow. What? Constant term. And here x raised to the power 2 and 2 is called exponent. What? Exponent. Now my dear students, I am going to tell you something else related to the polynomial. You have to remember all the time, what is the degree? Degree means, x, y and z are called variable. What? Variable. In polynomial, variable, constant, coefficient, exponent, terms together is a algebraic expressions more than two terms made up of a polynomial. Poly means many, terms mean many terms. Degree means the highest power or exponent on the variable is called degree of that polynomial, right? Degree means the highest power or exponent on the variable is called degree of that polynomial. My dear student, here x is variable, yes or no? Highest power on the variable here is the 1 and here is the 2. The highest power on the variable is 2. That's why degree would be like 2. Understand or not? Now I am going to tell you the classification of polynomial on the base of number of terms and on the base of number of degrees. How many types of polynomial? Stay tuned with me. Here, types of polynomial. Based on the degree, there are total 4 types of polynomial: constant polynomial, linear polynomial, quadratic and cubic. Based on the terms, there are total 3 types of polynomial: monomial, binomial and trinomial. Let's explain very well. चलिए explain करते हैं one by one. First of all, constant polynomial. If
degree equal to 0 is called constant. If a polynomial whose degree is 0 and this polynomial is called constant polynomial, suppose for example 5 is a constant. If we write in terms of polynomial, how it would be? 5 into x to the power 0. As you all know that x to the power 0 is equal to 1. If 5 into x to the power 0 means 1, then 5 into 1, that is the 5, right? Same thing. So here x means what? Variable. And what is the power? That is a 0. That's why this polynomial is called constant polynomial. Now come to the linear polynomial. If degree is 1, this polynomial is called linear polynomial. Yes or no? Suppose for example x plus 1, 2y plus 5, 3z plus 9. Here x means variable. The highest power on the variable, that is the 1, it means degree is 1. That's why this is a linear polynomial. Similarly, here 2y plus 5, here y means variable, right? The highest power on the variable is 1, it means degree means 1, right? That's why this polynomial is called linear polynomial. Similarly, 3z plus 9, the highest power on the variable is 1, it means degree 1. That's why this polynomial is called linear polynomial. Understand or not? Now, quadratic polynomial. Quadratic polynomials, this is very important, right? Quadratic polynomial, it's very important. In class 10 mathematics, another chapter you will get, chapter number 4, quadratic equation, right? So why the quadratic polynomial is important, you will understand afterwards. Stay tuned with me. If degree equal to 2, this polynomial is called quadratic polynomial. It means suppose 2x square plus 3x plus 1. Here is a polynomial. The highest power on the variable, that is the 2, it means degree 2. That's why this polynomial is called quadratic polynomial. More example, we can write x square plus 1, right? 2y square plus 9, etc. Now the cubic polynomial, if degree equal to 3, this polynomial is called cubic polynomial. It means x cube minus 1, 2x cube plus 5x square plus 3x plus 9. Here the highest power on the variable, here exponent means 1, here is 2 and here is 3. The highest exponent on the variable is 3, it means degree is 3. That's why this polynomial is called cubic polynomial. Wow. Understand or not? Based on the terms, there are total 3 types of polynomial. First one is monomial, binomial and trinomial. Based on the terms, monomial means if a polynomial have only one term is called monomial. It means 5x, 7y cube, 5x to the power 100, etc. Here all the polynomial have only one term, that's why it's called monomial. Degree doesn't matter, terms is matter. Binomial means only two terms, it means x plus 1, 2x square minus 4, right, etc. Here is two term, that's why it's called binomial, two term binomial, right. Now trinomial means if a polynomial have only 3 terms is called trinomial. Suppose 2x square plus 3x plus 1, 12x square minus x minus 1, these are the polynomial is called trinomial. Here total term is 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. That's why trinomial. Now come back to the polynomial. My dear student, already you knew what is degree and what is polynomial, types of polynomial, linear, constant, quadratic, right? Already
you knew the type of polynomial. Now, I told a few minutes ago that quadratic polynomial is most important for you. Now you will understand afterwards. Stay tuned with me. Ax square plus bx plus c. This is an algebraic expressions, more than two terms, exponent, variable, real number, all are in algebraic expressions. That's why this is a polynomial. Since the highest power on the variable is 2, it means degree 2. That's why it is called quadratic polynomial. If alpha and beta are the zeros of px. Px means x variable polynomials represent in short p of x. Then we get 1 alpha plus beta equal to minus b by a, and second number alpha into beta equal to c by a. Alpha and beta, it means the sum of the zeros. What? Sum of zeros in the right side, minus b means what? Multiple of x. It means coefficient of x. What? Coefficient of x. A means multiple of x square, it means coefficient of x square. It means coefficient of x square. Now, alpha into beta equal to c by a, it means product of zeros. In other words, we can write product of zeros equal to c by a on the right side. C means what? Constant term. Constant term. A means coefficient of x square. This is the important thing you have to remember, and the numerical will be set based on these two formula. You have to remember these things. Sum of the zeros equal to minus b by a, it means coefficient of x divided by coefficient of x square. Product of zeros, it means constant term divided by coefficient of x square. In the examination, the questions are given, you have to verify both the zeros and coefficient of the polynomial. Yes or no? Dear students, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ. ये क्वेश्चन आपका बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे. क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ px equal to kx square minus 8x plus 6 is 4, then the value of k is option 6, 8, 2, D number option is 1. ये वाला क्वेश्चन असम बोर्ड फाइनल 2024 में दिया था. ध्यान से देखिए. तो क्वेश्चन वाला पहले लिखिए p of x equal to kx square minus 8x plus 6. Right. Now here a means k, b means minus 8, c means 6. My dear student, this is an quadratic polynomial. If we are going to compare this quadratic polynomial in the standard form, ax square plus bx plus c, then afterwards we will get the value of a equal to k, b equal to minus 7 and c equal to 6. Given, what is the given? The sum of the zeros. Given that sum of the zeros means alpha plus beta equal to how much? That is the 4. Yes or no? My dear student, we know alpha plus beta equal to minus b by a equal to 4. What is the value of b? Now putting the value of b and a
What is the value of B? -8. And what is the value of A? That means the K equal to 4. My dear student, you know Bodmash, we have to multiply first of all minus ja plus, right? 8 1 ja 8 divided by K equal to 4. Now cross multiply 4K equal to 8 1 ja 8. That means K equal to 2. Where is the 2? Option number C is the correct. डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए और एक मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं. क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज हाउ मच. ये वाला क्वेश्चन फाइनल 2019 में दिया है. चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं. ऑप्शन दिया है ए नंबर ऑप्शन -15, बी 15, सी नंबर √15 एंड डी नंबर ऑप्शन इज -√15. चलिए हम सॉल्व करते हैं. घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए. हियर एक्स स्क्वायर -15, दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इट मीन्स व्हाई द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? डिग्री इज 2, दैट्स व्हाई दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो माय डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, इनको जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसके साथ हम कंपेयर करेंगे. तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर x वाला टर्म है नहीं, तो हम क्या करेंगे प्लस 0 इंटू एक्स करेंगे और -15, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का साथ कंपेयर कर सकते हैं. इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ पर a का वैल्यू मिल जाएंगे 1. हियर द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू इट मीन्स 0 एंड वैल्यू ऑफ c मीन्स हाउ मच? -15. नाउ यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करना है कि आपको ए बी और सी का वैल्यू कैसे भी करके आपको पता करना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, आप इनका साथ कंपेयर करिए. ठीक है, तो चलो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपको फॉर्मूला दिया था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. यस और नो? एंड दिस इज वी नीड टू फाइंड इट आउट. Right? Now, what is the value of C? C means -15. And what is the value of A means how much? 1. So, put the value of A means 1. It means denominator form, if the value of whatever is 1, then it would be, in mind हमेशा रहता है कि 1. तो चलो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि -15. तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया? -15. तो हमारा आंसर आ चुका है. तो -15 कहां पर है? ढूंढो. ए रहा -15. नाउ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. देयर स्टूडेंट, ऑलरेडी आप लोग सीखा है कि इफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन देन द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाउ टू फाइंड, ऑलरेडी यू अंडरस्टूड. नाउ मैं आप लोगों को और एक मजेदार टॉपिक में सिखाने वाला हूं. ये वाला टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है. बहुत से ऐसे स्टूडेंट इस टॉपिक को समझ नहीं पाते. ये टॉपिक इसका रिवर्स है, थोड़ी देर पहले जो मैंने अभी बताया. तो यहां पर अभी क्या होगा, जीरोस गिवन रहेगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. मतलब रिवर्स हुआ कि नहीं? यस. तो माय डियर स्टूडेंट, स्टे ट्यून विथ मी. इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस इज गिवन, देन व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? By using this formula, we can easily calculate the new quadratic polynomial. Right? Now, formula would be like P of X. P of X means polynomials in X variable, in short, denoted by P of X, equal to K into X square minus alpha plus beta into X plus alpha into beta. This is the new formula, which by using this formula we can easily find it out the new quadratic polynomial if we know the zeros. Right? चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का दौरान समझाने के लिए कोशिश करूंगा. आप लोग स्किप मत करना, वीडियोस को देखते रहिए मेरे साथ. चलिए मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूं, आप लोग देखिए.
What is the quadratic polynomial whom zeros are -4 and -5 is a number x square minus 9x plus 20, option B x square plus 9x plus 20, option C x square minus 9x minus 20, option D x square plus 9x minus 20. राइट चलो मेरे साथ बने रहिए आप लोग, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जीरो से मतलब अल्फा इक्वल टू -4 पकड़ लेते और बीटा को हम -5 पकड़ लेते। ये सुन लो माय डियर स्टूडेंट, हम अभी क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम फाइंड आउट करेंगे। चलो हम साइड में कर लेते हैं। राइट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। कोई नहीं, ये जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा -b/अल्फा इंटू बीटा c/a, चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम पहले करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, -5 -4 एंड -5, -4 एंड -5 इक्वल टू -9। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इट मीन्स -4 इंटू -5, माइनस माइनस जब प्लस 4 5 जा 20। ये सुन लो, नाउ बाय यूजिंग मैंने जो फॉर्मूला दिया था क्या था, p ऑफ x, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सुन लो, यस फाइंड आउट। तो k मीन्स कांस्टेंट, रहने दो कोई इशू नहीं, हम बाद में कैंसिल कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, चलो -9, वाओ, अब लोग पुट कर दो -9 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है 20, तो आप लोग पुट कर दीजिए 20। ये सुन लो, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जा प्लस 9 इंटू एक्स 9x प्लस 20। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, हम k का वैल्यू 1 पकड़ लेते। कितना कर लेते, लेट अस एज्यूम the value of k is 1, then what is the polynomial? चलो k का वैल्यू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। 1 का साथ दुनिया में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो वही नंबर होगा। ये सुन लो, यस, तो दैट्स 1 का साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। फाइनली हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। वाह, बी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट। कैसा लगा, बूम